جس کا لے آؤٹ پلان اور ڈیزائن بنایا ہے ماہر آرکیٹیکٹس نے۔ ویل پلان انفراسٹرکچر جہاں پر بجلی، پانی اور سیوریج کا ایک خودکار نظام موجود ہے، اور سب سے مزے کی بات، اتنی زیادہ سہولیات ہونے کے باوجود اس کی قیمت ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہے۔ اس کی سائٹ وزٹ کریں جہاں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ تو پھر دیر نہ کیجیے، آج ہی اپنے پلاٹ کی بکنگ کروائیے، ایک ایسی محفوظ سرمایہ کاری جو وعدہ ہے آپ کے بہترین مستقبل کا۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں گھر کی، تو گھر کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں سکون ہو، اطمینان ہو، خوبصورت زندگی اور حسین نظارے ہوں، ہریالی ہو، درخت ہوں، جہاں کی فضا میں تازگی کا احساس ہو۔ ایسی بہترین اور صحت مند زندگی ہو جہاں آپ اور آپ کے بچے پرسکون اور محفوظ ہوں۔ تو ایک ایسے ہی گھر کی تعبیر ہے گل مہر سٹی، ایک ایسا تعمیراتی منصوبہ جس سے جڑا ہے کراچی شہر کا مستقبل۔ کراچی M9 موٹر وے کی پرائم لوکیشن پر واقع ایک روڈ فیسنگ پروجیکٹ، ایک گیٹڈ کمیونٹی جو ہر طرح سے محفوظ ہے۔ ویل پلان روڈ نیٹ ورک، 24 گھنٹے سیکیورٹی اور سرویلنس، جہاں پر پارکس، پلے گراؤنڈز، ایڈونچر تھیم پارک، زو، ڈے اینڈ نائٹ جنگل سفاری۔ اس کے علاوہ سکولز، کالج، یونیورسٹی، ہاسپٹل، کمیونٹی سینٹرز، کمرشل ایونیوز، کیفیز، ریسٹورانٹ، آڈیٹوریم، سینما، سپر مارکیٹس، شاپنگ مال اور سپورٹس کمپلیکس بھی، لگژری ہائی اینڈ اپارٹمنٹس، پریمیم ولاز، اسٹیٹ آف دی آرٹس ہل ریزورٹس اور فارم ہاؤسز جو کہ ڈیزائن کیے گئے ہیں ماڈرن آرکیٹیکچر پر۔ گل مہر سٹی متعارف کروا رہا ہے کراچی میں پہلی بار ہل گولف کلب، ہارس رائڈنگ کلب، واٹر پارک، لیک اور بہت کچھ۔ یہ سب امینٹیز اس پروجیکٹ کو بہت منفرد بناتی ہے۔ سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے منظور شدہ ایک قابل اعتماد پروجیکٹ، جس کا لے آؤٹ پلان اور ڈیزائن بنایا ہے ماہر آرکیٹیکٹس نے۔ ویل پلان انفراسٹرکچر جہاں پر بجلی، پانی اور سیوریج کا ایک خودکار نظام موجود ہے، اور سب سے مزے کی بات، اتنی زیادہ سہولیات ہونے کے باوجود اس کی قیمت ایک عام آدمی کی پہنچ میں ہے۔ اس کی سائٹ وزٹ کریں جہاں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے۔ تو پھر دیر نہ کیجیے، آج ہی اپنے پلاٹ کی بکنگ کروائیے، ایک ایسی محفوظ سرمایہ کاری جو وعدہ ہے آپ کے بہترین مستقبل کا۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ وزٹ کیجیے۔ جب ہم بات کرتے ہیں گھر کی، تو گھر کیسا ہونا چاہیے؟ جہاں سکون ہو، اطمینان ہو، خوبصورت زندگی اور حسین نظارے ہوں، ہریالی ہو، درخت ہوں، جہاں کی فضا میں تازگی کا احساس ہو۔ ایسی بہترین اور صحت مند زندگی ہو جہاں آپ اور آپ کے بچے پرسکون اور محفوظ ہوں۔ تو ایک ایسے ہی گھر کی تعبیر ہے گل مہر سٹی، ایک ایسا تعمیراتی منصوبہ جس سے جڑا ہے کراچی شہر کا مستقبل۔ کراچی M9 موٹر وے کی پرائم لوکیشن پر واقع ایک روڈ فیسنگ پروجیکٹ، ایک گیٹڈ کمیونٹی جو ہر طرح سے محفوظ ہے۔ ویل پلان روڈ نیٹ ورک، 24 گھنٹے سیکیورٹی اور سرویلنس، جہاں پر پارکس، پلے گراؤنڈز، ایڈونچر تھیم پارک، زو، ڈے اینڈ نائٹ جنگل سفاری۔ اس کے علاوہ سکولز۔ یہاں پہ ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہے، جو اس پروجیکٹ کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور ہاں، آپ چاہیں تو سائٹ آفس میں وزٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں موجود پروفیشنل عملہ اس پروجیکٹ کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہم وقت موجود ہیں۔ تو آئیے، آپ بھی اپنے پلاٹ کی بکنگ کروائیں اور ادائیگی 5 سال کی آسان ماہانہ قسطوں میں اپنے گھر کے خواب کو اب حقیقت بنائیں۔ مزید تفصیلات آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.gulmohargroup.com.pk۔ مہنگائی کے اس دور میں اپنا گھر بنانا بس ایک خواب ہے۔ کیا یہ خواب حقیقت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اس خواب کو حقیقت کا رنگ دے رہا ہے گل مہر سٹی کراچی، ایک ایسا رہائشی پروجیکٹ جو ڈیولپ ہو رہا ہے صحت مند ماحول کے لیے، ایک گرین سٹی کے کانسیپٹ پر، جہاں آپ اور آپ کی فیملی ایک پرفضا مقام میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ کراچی حیدرآباد M9 موٹر وے کی پرائم لوکیشن پر واقع روڈ فیسنگ پروجیکٹ، جو کہ آپ کو مہیا کرتا ہے جدید ترین سہولیات سے آراستہ معیار زندگی۔ اور ہاں، اس کا لیئر پلان اور آرکیٹیکچر ورک بریلینٹ، کم قیمت، اعلیٰ معیار
HD اور SBCA سے منظور شدہ سرمایہ کاری کا بہترین موقع جو آپ کے بچوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے. گل مہر سٹی کراچی میں کہنا ہے کہ ہم دعویٰ نہیں کرتے. اپنا پلاٹ بک کرنے سے پہلے ایک بار سائٹ ضرور وزٹ کریں. تو پھر چلتے ہیں سائٹ پر, آئیے. جی میں اس وقت موجود ہوں گل مہر سٹی کراچی کی سائٹ پر, اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہے جو اس پروجیکٹ کی کامیابی کی ضمانت ہے. اور ہاں آپ چاہیں تو سائٹ آفس میں وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں موجود پروفیشنل عملہ اس پروجیکٹ کی تمام ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے ہم وقت موجود ہیں. تو آئیے آپ بھی اپنے پلاٹ کی بکنگ کروائیں اور ادائیگی 5 سال کی آسان ماہانہ قسطوں میں اپنے گھر کے خواب کو اب حقیقت بنائیں. مزید تفصیلات آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں www.gulmohargroup.com.pk. مہنگائی کے اس دور میں اپنا گھر بنانا بس ایک خواب ہے. کیا یہ خواب حقیقت ہو سکتا ہے؟ جی ہاں, اس خواب کو حقیقت کا رنگ دے رہا ہے گل مہر سٹی کراچی, ایک ایسا رہائشی پروجیکٹ جو ڈیولپ ہو رہا ہے صحت مند ماحول کے لیے, ایک گرین سٹی کے کانسیپٹ پر, جہاں آپ اور آپ کی فیملی ایک پرفضا مقام میں زندگی گزار سکتے ہیں. کراچی حیدرآباد M9 موٹر وے کی پرائم لوکیشن پہ واقع روڈ فیسنگ پروجیکٹ جو کہ آپ کو مہیا کرتا ہے جدید ترین سہولیات سے آراستہ معیار زندگی. اور ہاں, اس کا لیئر پلان اور آرکیٹیکچر ورک بریلینٹ, کم قیمت, اعلیٰ معیار, HD اور SBCA سے منظور شدہ سرمایہ کاری کا بہترین موقع جو آپ کے بچوں کے محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے. گل مہر سٹی کراچی میں کہنا ہے. کالج Assalamu alaikum and welcome to all our viewers who are watching this telecast live from TMC Cricket Ground. It's match number 15 of Gul Moher City presents Youth Friendship League. It's a very crucial match between Team Burj Builder Hawks and Mashal Plastic Tigers. Remember, it's the last league game of this tournament. Both teams are coming off a defeat from their previous matches. Mashal Plastic Tigers lost against Cambridge Strikers the other day, whereas Burj Builders Hawks suffered a defeat on the hands of Cambridge Strikers. Munibur Rahman and Mustafa Musa are going to be the openers for Mashal Plastic Tigers. Earlier in the toss, Mashal Plastic Tigers won the toss and they decided to bat first. Toss, as we all seen, has played a crucial role in this tournament. Chasing has been difficult in this ground, so there was no hesitation by the Mashal Plastic Tigers captain after winning the toss and choosing to bat first. Anas Sattar Karwa is going to take the new ball from the opposite end. He starts off with a wide, signal by the umpire. Mustafa Musa is on strike. Mustafa Musa, very valuable player for Mashal Plastic Tigers. Not only he opens the bat, he also starts off with a new ball. He has also been the hero so far for Mashal Plastic Tigers with the ball. We saw him picking up a 6-wicket haul and a hat-trick in their game against NJS Chargers here at the same venue. Mashal Plastic Tigers are placed at 3rd position in the points table, whereas Burj Builder Hawks are standing at 4th. If they win tonight, Mashal Plastic Tigers, they will go up to number 2nd. And Cambridge Strikers will then have to face Burj Builder Hawks in eliminator number 1. Whereas if Burj Builder Hawks manage to win tonight, they will end up with 3rd position. And again, these two teams will face each other in eliminator number 1. So crucial game for both these teams tonight here at TMC Ground. University, hospital, community centers, commercial avenues, cafes, restaurant, auditorium, cinema, supermarkets, shopping mall,
और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिजाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी Anas Sattar Karwa is going to continue from the opposite end. Tall left-arm fast bowler. Specializes in bringing the ball back into the right-handers with a new ball, both in the air and off the pitch. The two fielders outside the 30-yard circle are deep fine leg and deep third man. All the fielders on the offside are inside the 30-yard circle. There is point, cover, extra cover. Again, second wide of the over. And this time batsmen are going to go for a single as well. So 2 runs will be added to the total. And not a single delivery has been bowled in this over. Anas Sattar Karwa has been able to swing the ball, but his direction, his line and length hasn't been good so far. We also saw that he went wicketless in the last match against Sumia Gladiators. He just bowled 3 overs the other night, went for 20 runs and went wicketless. So we'll be looking to do some damage earlier on here in this batting power play. Munibur Rahman now is on strike. Nice delivery, trapped on the pads. Big shot, but not given out given by the umpire. Good comeback this by Anas Sattar. That was full. That was directed right into the boots of Munibur Rahman. Munibur Rahman, who's batting well outside the leg stump. There you see the ball coming back in, hit his pads. His bat was nowhere near the ball. There was a big shot from the bowler. But the ball was always going down the leg side with the swing that Anas gets. So a leg bye was added to the total. This time again, almost getting an inside edge. Mustafa Musa. There you see again Anas Sattar Karwa getting the ball come back in, and there was a big gap between the bat and bat. The ball narrowly missing the leg stump. So Anas already looking dangerous and lethal with this new ball. Mustafa Musa is a hard hitter. Four runs on the board so far, 3 runs coming off wides, and a single from Munibur Rahman. There you see again coming back in Mustafa Musa getting an inside edge. The ball goes down to the fine leg. Just a single. So encouraging signs these for Anas Sattar Karwa. Burj Builder Hawks in their last game against Game-Rich Strikers were given a target of 172 and they just lost by 12 runs. Whereas Mashal Plastic Tigers couldn't chase down the target of 139. They were bowled out for 128. So chasing has generally been difficult in this tournament. There you see again smashing it on the offside, straight to the fielder at point. Couldn't find the gap on that. Munibur Rahman. Anas Sattar Karwa's new ball partner Rehan Nepal is not playing tonight. He got him off to a good start in the previous game when he picked up that first wicket. Still 2 more balls remaining in this first over from Anas. There you see the ball coming back in, split straight to mid-off. There was an attempt of a single. Chance of a run out at the batter's end. Was Munibur Rahman inside? And it has been signaled as out by the leg umpire. So what a start this is for Burj Builder Hawks. Important batsman dismissed, Munibur Rahman. He timed it well. He played it straight to mid-out, and I don't think there was a single. Good throw from the fielder at the keeper's end. He gathered it nicely and took the bails off in a flash. So Munibur Rahman has been dismissed. He scored 59 crucials in the previous game. He's walking back into the pavilion after just scoring 1 run. So Mashal Plastic Tigers are 5 for 1.
तारीफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत जिंदगी और हंस। So what a start this has been for Burj Builder Hawks. They have picked up their first wicket courtesy of a run out. Munibur Rahman, who batted sensibly in their last game, scored 59 runs. Just went for scoring 1 run tonight. Ali Mustafiz is a new batter. He's a left-hander. Anas Sattar has straight away introduced the first left fielder now, because he'll be looking to move the ball away from the left-hander. Starting off with a shorter delivery, played with the straight bat, straight to the bowler. So a good start from Burj Builder Hawks. Mashal Plastic Tigers, after the end of the first over, are 5 for 1. There we see again how Munibur Rahman was dismissed. He was halfway down the track when Mustafa Musa sent him back. There you see Munibur Rahman complaining from Mustafa Musa. He thought there was an easy single to be taken, but he was dismissed in the end. So 5 for 1 Mashal Plastic Tigers after the end of the first over. कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं। Like Umar Khanani is going to share the new ball from the masjid end. Good delivery to start off with, inside edge from Mustafa Musa. The ball running down to find leg. And an easy couple added to the total. We saw Rehan Nepal sharing the new ball in their previous game against Cambridge Strikers. Tonight the responsibility has been given to Mustafa Khanani. Umar Khanani. He also has taken the first slip in. Nice outswinger. Mustafa Musa was looking to play that shot on the offside. Decided to let the ball go. With that delivery, Umar Khanani even surprised himself. The ball swung away very late in the air. It was a good ball, appreciated by the fielder at the first slip position. The only fielder he has taken outside the 30-yard circle is at long off. There you see again, ball moving away. Crashed on the offside. The fielder at mid-off is giving up to chase. Fancy footwork to stop the ball from going to the boundary. Another couple added to the total. It wasn't time as well as Mustafa would have liked, but still he still managed to pick up those 2 runs. Mustafa Musa on strike now. This time again, playing it straight. And there's a misfield by the fielder at mid-on. And this will run away for first boundary to Mashal Plastic Tigers. Coming up the bat from Mustafa Musa. Umar Khanani again keeping the ball fuller. This time trying to bring the ball back into the right-hander.
Again, Mustafa Musa couldn't time it, and there was a sloppy piece of fielding at mid-on that caused the ball to run away for 4. So Mustafa Musa has made his intentions pretty clear tonight. This time bowling down the leg side. The ball hitting the pads on the way. The umpire not giving it as wide. Mustafa Musa thought he didn't touch it. It's important that the batting side utilizes his batting power play, because we have seen how difficult it gets during the middle overs to hit those big shots. This time it was uppish, played straight down to long off. So a single to end the over, with Mashal Plastic Tigers are 14 for 1 after the end of 2 overs. हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर। This time hit straight down the ground by Ali Mustafi, so he gets off the mark as well. So 2 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 15 for 1. और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफिजा मुकाम। Anas Sattar Karwa is going to continue from the opposite end. This time a nice outswinger. The person was looking to play it on the offside. The ball always moving late away from the bat. Nice run up, nice rhythmic action. The ball landing on around 4th and 5th stump channel, moving away from the left-hander. Almost got an outside edge, Ali Mustafiz. So we'll have to look for that delivery going away from him. If Anas can manage to bring the ball back into the left-hander from that same length, he will be really dangerous to negotiate. There you see again, almost getting an outside edge again. This time the ball was much straighter. Top piece of bowling this from Anas. He's making the ball talk. There you see again, this time ball landing right on that off stump channel and leaving the batter. With this type of bowling, the slip fielder is always in play. He's always waiting for that outside edge. Both the wicketkeeper behind the stumps and the first slip feeder will have to be sharp, because Anas Sattar Karwa is also bowling at a serious pace. Again, almost a carbon copy of what happened in the previous delivery. Anas Sattar Karwa kicking the turf in disgust. He absolutely deserved to pick up a wicket in this over. Beautiful piece of outswing bowling from the left armour. How unlucky Anas has been in this over. He's asking the fielder at point to move a little finer now. Ali Mustafi so far has no answer to this outswing bowling from Anas. It's better for him to take a single and get the North strikers in and let Mustafa Musa face those balls. No run has been conceded so far. This from Anas Sattar. There you see again, this time
Almost got an outside edge again. Anas Sattar was just playing with Ali Mustafi's head in this over. There we see again the ball landing right on that off stump channel and then moving away after pitching. Ali Mustafi is also playing very much away from his body. If he wants to drive the ball on the offside, his foot should be near to the stumps. His foot should be near to the pitch of the ball. So what an over this has been from Anas Sattar. Last ball of the over coming up. Will it be a maiden? There you see again. 6 deliveries have been bowled in that same spot, and Ali Mustafiz has not been able to connect either of them. 3 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 16 for 1. का मुस्तकबिल कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी, इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज। Still one ball remaining in this over from Anas. Ali Mustafa is again on strike. And this time it was much straighter. Finally, Ali Mustafa managing to get bat on ball. Anas Sattar should consider himself very unlucky. He could have picked up a wicket or two in that over. Mashal Plastic Tigers after the end of 3 overs are 16 for 1. जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। Umar Khanani is going to bowl the new over, his second over from the Masjid end. Again, he has taken long off outside the 30-yard circle. Mid-on is still inside. All the fielders or the offside are inside the 30-yard circle. This time again went for that flashing drive outside the off stump. Played straight to long off. So good bowling this from Umar Khanani. He's bowling according to his field. What a previous over that one was for Anas Sattar Karwa. The batter Ali Mustafid had no answer to those outswingers from Anas. He played and missed the 5 deliveries, finally managing to get bat on ball in the last ball. It's important that Umar Khanani could maintain the same sort of pressure from the other end. This time the ball coming back into the left-hander. Played straight to long off. So Ali Mustafiz, after facing 8 deliveries, has now scored 2 runs. Umar Khanani doesn't have that much pace as Anas possess, but even he is bringing the ball back into the right-hander. The new ball is crucial. If you can pick up early wickets, there you see play it smash straight down the ground, and is that gonna go all the way for 4? No, the fielder at long off cuts that one off. So it was a good shot from Mustafa Musa. It was a fuller delivery from Umar Khanani. It was smashed down the ground, but there was protection out there in the deep. So another single added to the total. Umar Khanani obviously possessed some less serious challenges compared to Anas Sattar. Again changing the angle, coming around the wicket to the left-hander. Nicely defended with a straight bat. This time again, take the aerial route. Ali Mustafiz almost got holed out in the deep. The fielder at long off has been positioned perfectly.
Luckily, Ali didn't time it that well, otherwise that would have carried straight to the throat of the long off fielder. So just 4 runs of this over so far from Umar Khanani. Last ball coming up. Mustafa Musa is on strike. Slip has been removed. This time coming down the track, almost yorked him. And that ball could have rolled back onto his stumps. So a dot ball to end the over with. 4 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 20 for 1. और सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में Anas Sattar Karwa is going to bowl his third over. Good decision by the captain of the fielding side. Oh, bowled him! He absolutely deserved that wicket, Anas Sattar Karwa of Ali Mustafiz. This time it pitched on the roundabout leg and off stump. It didn't move as much as Ali Mustafiz was expecting. There we see again. He went on to play that delivery outside the off stump without moving his feet. And that ball crashed into the off stump. Wonderful piece of bowling this from Anas Sattar Karwa. Ali Mustafiz has been dismissed after scoring just 3 runs of 12 deliveries. Mashal Plastic Tigers are 20 for 2. University, hospital, community centers, commercial avenues, cafes, restaurant, auditorium, cinema, supermarkets, shopping mall और sports complex भी, luxury high-end apartments, premium villas, state-of-the-art hill resorts और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? So Bilal is the new batter and he has made his way out at the centre. And what a wicket that one was for Anas Sattar Karwa. Let's have a look at that replay again of that wicket. Anas Sattar Karwa charging in, again bowling in around middle and off stump channel. And Ali Mustafiz didn't learn from his mistakes in his previous over. Went on to play away from his body. And in the end losing his off stump. I think it was a very good decision by Burj Builder Hawks captain to give Anas Sattar his third over. He was so close of picking up a wicket in his previous over, but finally managed to dismiss Ali Mustafiz in his third. So not a good start this from Mashal Plastic Tigers. They have lost 2 wickets inside the batting power play. And if he continues the ball on that same channel, Anas Sattar can cause some serious damage again. This time smashed on the offside, straight to the fielder at point. Dot ball. In the previous over, Anas Sattar was bowling at around off stump and the fourth stump channel. He was getting the ball to move away from the left-hander. So obviously he was missing the outside edge of Ali Mustafiz. In this over, he corrected his length, his line. He bowled at around the middle stump. And the ball again moving away, took the off stump of Ali Mustafiz. Good thinking this from the bowler. Only one boundary has been hit. We are into the 5th over of this batting power play. So things have been difficult for Mashal Plastic Tigers batsmen. This time again
played straight to the bowler and almost carried to the left hand of the Anas Sattar. Could have been the second wicket of the over to Anas. There you see this time the ball pitching in around off stump, coming back in, played with the straight bat and went to Anas after the first bounce. What an over this has been from Anas as well. He has picked up the only wicket so far. He has only gone for 5 runs. He's bowling his third over. Again, this time playing on the offside. Brilliant piece of fielding by the fielder at extra cover. He stopped a certain boundary. Appreciated by the bowler as well. That's the sort of effort you need from the fielders if you are bowling at that channel. If your bowler is bowling well and producing those dot deliveries and those wicket taking deliveries, the fielder are supposed to comprehend their effort as well. There you see the diving effort from the fielder on his left side, preventing the certain boundary. Batter meanwhile crossfired that single, and now Mustafa Musa is going to be facing some swing bowling from Anas Sattar. Anas has decided to come around the wicket to Mustafa. Slip has been removed, and obviously he'll be looking to bring the ball back into the right-hander, so he has taken the deep fielder on the onside, deep square leg in place now. This time again, driven on the offside. Couldn't find the gap on that occasion, went straight to the extra cover fielder, so another dot ball. Just 1 run of this over so far from Anas, and also an important wicket of Ali Mustafiz. They are just scoring at 4.5 runs and over. Mashal Plastic Tigers. Remember, if they lose, they go on to the 4th position. Last ball of the 5th over coming up. Mustafa Musa facing Anas Sattar. This time smashed down the ground, and it's gonna go all the way for 4. Top shot this from Mustafa Musa. Anas Sattar Karwa couldn't find that much swing on that ball. He bowled it fuller, and Mustafa Musa was standing wide on the crease, and he absolutely smashed it straight over the head of the umpire, and there was no chance for the fielder at mid-on to cut that one off. So a boundary to end the over with. 5 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 25 for 2. यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम अब मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी। Umar Khanani is also going to bowl his 3rd over on the trot in this batting power play. He has bowled economically so far, though he hasn't picked up wickets, but he hasn't given away easy runs as well. Bilal straight away getting off strike on the first ball of this over. Mustafa Musa struck a beautiful boundary in the last ball of the previous over from Anas. Anas obviously changing his angle, brought the ball back into the right-hander, and Mustafa was waiting for that swing. He was batting outside his crease to negate that swing, and I think it's a good thinking from the batter. This time again, smashing it on the offside, straight to long off-fielder. Almost a helicopter shot that we have seen so much from Mahendra Singh Dhoni from Indian side. Mustafa Musa now batting on 17. He will have a crucial role to play with the ball in his hand later on in the second innings as well. This time again played on the offside. Couldn't find the gap. Good throw at the keeper's end, but the batter was well in.
Remember, it's the last league game of Gulmohar City presents Youth Friendship League. Mashal Plastic Tigers are at the 3rd position, and Burj Builder Hawks are standing at 4th. This time again, smashed down the ground. Is that gonna go all the way? Yes! One bounce and into the fence. 4 signal by the umpire. It was a risky shot from Mustafa Musa because the fielder at long off wasn't standing at the boundary. But he hit that straight. And one bounce and went over the boundary for 4. So Mustafa Musa, after hitting the boundary of the last ball in the previous over, has smashed Umar Khanani down the ground. This time it was a good Yorker. Squeezed out of the pitch. The ball went nowhere. And a dot ball. Mustafa Musa now batting on 21 of just 15 deliveries. Bilal, on the other hand, is on 3. Umar Khanani has gone for 22 runs and he is bowling his 3rd over. This time again, it was a good ball outside the off stump. Mustafa Musa didn't get his bat down on time. So 6 overs have been done with. Mashal Plastic Tigers are 32 for 2. कराची एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकान में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट वो विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं w। So a bowling chase has taken place from the opposite end. Anas Sattar Karwa has been replaced by Usman Ashraf. The batting power play has been done. The fielders can afford to stand outside the 30-yard circle. Usman has taken deep square leg. Long on and long off, all outside the 30-yard circle. This time played straight to the offside fielder, and there was a throw at the bowler's end. The batters are going to take the single of the overthrow. It could have been tied if the ball had hit directly onto the stumps. Lucky call for Mustafa Musa. Deep point now in place for Mustafa. Mustafa smashing it in that direction. There is protection out there in the deep. Good running by the 2 batters. They go for that 2 runs. Mustafa Musa now batting on 23. Bilal supporting him well. After the fall of that 2nd wicket of Ali Mustafiz. This time Mustafa Musa was looking to smash it down the ground. It hit the bowler's arm and went on the onside, allowed the batter to go for that single. So another run added to the total, which brings Bilal on strike now. Usman Ashraf, sole left-arm bowler. This time bowling it short, played straight to the bowler. He almost took that chance. It wasn't that far away from Usman Ashraf.
There you see Usman bowling it short. Bilal looking to play it on the onside. And just over the head. This time smashing in on the offside. But there is protection out there at the deep. Straight to long off. Another single. So lucky call for the batter Bilal. Usman Ashraf hasn't conceded a boundary in his over so far. This time straight to the fielder at extra cover. Another dot ball from Usman. So 7 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 38 for 2. चाहिए जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली। So Umar Khanani has been replaced by Abdul Rahman Bombia from the Masjid end. He bowled well in the last game against Sumia Gladiators. He picked up a couple of wickets during the middle stages of these innings. Again, sliding in nicely, roundabout at off stump channel. The batter got an outside edge, went straight to the short third man. They are scoring at round about 5.5 runs and over Mashal Plastic Tigers. Bilal now is on strike and he has smashed it over the offside. Beautifully found the gap between the extra cover and long off. And fancy footwork. With just a couple. It was nicely timed over the head of extra cover fielder. And that shot brought 2 runs to Bilal. This time again. Hit straight down the ground. The fielder at long off is going to cut that one off. So a nice decent partnership building between these two batters. Mustafa Musa and Bilal. Abdul Rahman Bombia is also a wicket taking option for Burj Builder Hawks. This time again hitting it on the offside, but there is protection out there in the deep. One bounce straight to the fielder. Hasnain Deriwala is standing at deep extra cover. He provided them a good start in the batting power play in the previous game to Burj Builder Hawks. This time hitting it on the onside, wide of the fielder at long on. He's charging towards the ball, but the batter will go for those 2 runs. Good running by the 2 batters. Bilal now is on strike facing the final delivery from Abdul Rahman Bombia. Again hit that straight. The fielder at long on is going to cut that off. So 8 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 46 for 2. www.gulmohargroup.com.pk महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफिजा मकाम में जिंदगी। Usman Ashraf is going to continue for his second over.
This time smashed down the ground just for a single from Bilal. And it's a direct hit at the batter's end. There is an appeal from the wicket keeper. And the batters were quick to look at that. And they crossed for the 2 runs as well. So good running for the 2 batters. Mustafa Musa saw that opportunity that the ball has moved away after hitting the stumps. He asked Bilal to come back for the second run. 48 for 2 Mashal Plastic Tigers. We are inside the 9th over of the first innings. Here in this match number 15 of Gulmohar City presents Youth Friendship League. He's going to be bowling around the wicket to the right-hander, this time tucked on the onside. Work to do for deep field, square leg fielder. Hasnain Deriwala cuts that one off. Remember, if Burj Builder Hawks manage to win tonight, these 2 teams will be facing each other again in the eliminator number 1. This time bowling outside the off stump. Mustafa Musa was looking to play that expensive cut shot. And then there was this big gap between the bat and ball. There you see, missing that cut shot. Over optimistic appeal from the wicket keeper, turned down by the umpire. Again a similar delivery, smashing it on the offside. Good fielding effort by the fielder at extra cover. Keeping it down to just single. So with that single, 50 comes up now for Mashal Plastic Tigers in the 9th over. Both Bilal and Mustafa moving along nicely after the loss of 2 wickets. Nicely played straight back to the bowler from Bilal. We have seen previously in the tournaments, low totals have proven to be difficult to chase. So Mashal Plastic Tigers will know that even if they score 130, 140, they will be in the competition. This time Upish played straight to long off. So a single to end the over with 9 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 51 for 2. बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ, ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें, जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। Abdul Rahman Bombay is going to continue with his second over from the masjid end. He has protection straight down. Both long on and long off are outside 30-yard circle. There is deep point, deep square leg. Bilal is on strike. Again playing with the straight bat, straight down to long off. Mashal Plastic Tigers in their previous game were chasing a target of 139 given by Somia Gladiators, and they fell short by 9 runs. So they know even a target of under 150 can be defended. So far we have seen just 4 wides in 9 overs from Burj Builder Hawks. So their bowling effort has been very disciplined. They haven't conceded many boundaries either. This time smashing it on the offside. There is protection out there in the deep. Hasnain Deriwala throwing it straight to the wicket keeper. Nicely gathered there. This time again played upish, right into the center between long on and long off. This time some work to do by the fielder at long on. Only a single. Both these teams lost their previous game chasing down the target. Coming down the track, Mustafa Musa. Has he cleared the fielder at long on? Yes, he has. So first 6 to Mashal Plastic Tigers coming from the bat of Mustafa Musa.
Abdul Rahman Bombia this time flighting the ball, and Mustafa Musa came down the track and absolutely dismissed that ball out of his sides. It went and hit the tree on the full. This time again going for that big shot. It's high up in the air. Is there a chance for the fielder? And it's taken in the deep by the deep mid wicket fielder. Saad Dawood is the fielder completing that catch at deep mid wicket. And Mustafa Musa, after hitting a six on the previous ball, was looking to clear the boundary again. This time couldn't connect that well as he would have liked. He sliced that in the air. And Saad Dawood, after juggling, took that catch in the second attempt. So Mashal Plastic Tigers have now lost their third wicket. The latest batsman dismissed, Mustafa Musa, after scoring crucial 35 runs of just 26 deliveries. Mashal Plastic Tigers are now 60 for 3. गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची कह रहा है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ So Abdul Rahman Bombia has provided the much required breakthrough to the Burj Builder Hawks. Mubashir Anwar is the new batter in. He gets off the mark with a couple. It was a nice, decent partnership building and break that partnership. So 10 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 60 for 3. मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम अब मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www. Usman Ashraf is now going to bowl to the new batter Mubashir Anwar. Starting off with a wide delivery outside the off stump, the batter went for that cut shot. Missing the ball, went straight to the wicket keeper. So Mubashir Anwar is yet to get off the mark. This time nicely played on the offside, straight to long off. The fielder at long off is pretty square. So there is a big gap between the two fielders, straight, long on and long off. Eleven runs came in the last over from Mashal Plastic Tigers, but more importantly, they lost that wicket of the set batter, Mustafa Musa. He was looking to hit those 2 consecutive sixes, only managing to get the outside edge from his bat. This time hit straight to the fielder at cover position. Mubashir Anwar again. This time went for that pull shot and given by the umpire. Loose shot from Mubashir Anwar. And another wicket to Burj Builder Hawks. First of the night to Usman Ashraf. Usman Ashraf bowling that ball short. Mubashir Anwar was looking to pull that ball on the onside, getting an outside edge, and it was nice catch taken by the wicketkeeper. So with that dismissal, Mashal Plastic Tigers have now lost their 4th wicket. And they are 63 for 4. जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए,
जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट So Noman Bari is the new batter in. Mashal Plastic Tiger losing important wickets in this middle part of the innings. In previous over, Mustafa Musa was dismissed, and now it was the set batsman Bilal. So two relatively newer batter at the crease now. They will have to build these innings again. Usman Ashraf picking up his first wicket of the game tonight. This time bowling it flatter onto the stumps, pulled away by Noman Bari straight to deep mid wicket. So a single to get off the mark from Noman Bari. 11 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 64 for 4. आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, Abdul Rahman Bombia is going to bowl his third over from the Masjid end. He picked up that wicket of Mustafa Musa in his previous over. Now he's going to be bowling to the left-hander. This time bowling down the leg side. Nicely tucked on the onside just for a single from Noman Bari. We have seen how chasing has been difficult in this tournament for all the teams. But there was another match going on in the National Stadium, Karachi, between Pakistan and England. And we are hearing the news that Pakistan have chased down the target of 200 quite comfortably by 10 wickets. Babar Azam, the Pakistani skipper, scoring a brilliant century. Nicely played on the offside. Another single to Mubashir Anwar. This is an important passage of play. This time the ball coming back in after pitching. Noman was looking to play it on the offside. He didn't know where the ball is going to turn. This time again looking to heave it on the onside. The ball turning away from the batter. It was very close to that outside edge from Noman Bari. As we have seen so many times, boundaries have been difficult to come at this stage of these innings, especially when the spinners are operating. This time, he has been dismissed, Noman. Abdul Rahman Bombia has picked up his second wicket. Noman Bari again playing away from his body, just like Ali Mustafiz was doing to Anas Sattar in his innings. There you see again the ball pitching and coming back in and uprooting the off stump. Loose shot that from Noman. With that dismissal, Mashal Plastic Tigers are now 5 down for 66. And Noman Bari, the batsman, dismissed after scoring just 2. इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है
आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी। So Mashal Plastic Tigers have now lost their third wicket in their last 3 overs. Abdul Rahman Bombay picking up his second wicket. That too of a very good batsman, Numan Bari. Numan Chawla has made his way out at the centre. This time the ball hitting the pads, but it was always going down the leg side, so there was no point of appealing there. Good over that from Abdul Rahman. 12 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 66 for 5. gulmohargroup.com.pk महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर। जहां Usman Ashraf looks like he's going to be bowling his fourth over on the trot. Starting off with a wide delivery outside the off stump. Numan was looking to cut that away. In fact, it's Mubashir Anwar. So just 3 boundaries and a maximum has been hit in this innings so far. And we are in the 13th over. That shows how much difficult it has been for the two batters to strike the ball. This time played on the offside. One bounce to the fielder at short third man. It was a risky shot, especially considering after there are 3 fielders on the offside inside the circle. Numan Chawla now is back on strike. This time again cutting it away straight to short third man. Straight away getting off the mark Numan. Numan Chawla is also a good bowler with the new ball. He will have a big responsibility on his shoulder when he'll be sharing the new ball with Mustafa Musa. This time the ball coming back into the batter and almost sneaked his leg stump. The keeper couldn't gather it. And was there an inside edge? There you see, it was beautifully bowled by Usman Ashraf after pitching the ball coming back in. Was this time hit nicely straight down to long off. Last night we saw Classic Garments scoring a mammoth 197 when they were batting first. And it has again sneaked through the leg stump. How did that ball miss the stumps? This time as you see the ball pitching and again coming into the batter. And it was marginally close to the leg stump. The batter might have got an inside edge. And he completed the single. So 13 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 72 for 5. Centers, commercial avenues, cafes, restaurant, auditorium, cinema, supermarkets, shopping mall और sports complex भी. Luxury high-end apartments, premium villas, state-of-the-art hill resorts और farm houses जो कि डिजाइन किए गए हैं. Ashraf has been done with his 4 overs. He picked up a wicket and went for just 17 runs.
And Abdul Rahman Bombia is also going to bowl his 4th over on the trot. This time played deep on the onside just for a single. As I was mentioning, Classic Garment scoring a mammoth 197 in their previous game against Cambridge Strikers and winning it comfortably. So they are resting at the top position of the points table. They have qualified for the finals. This time playing it deep on the offside. Hasnain Dairywala gathering the ball and throwing at the wicketkeeper. Still no signs of any boundaries coming off the bat from Mashal Plastic Tigers batters. This time looking to sweep it down the leg side. The ball absolutely went nowhere after hitting the bats. Another dot ball. Good bowling this from Abdul Rahman. He has bowled well so far tonight. Again, he has been amongst the wickets, picking up 2 wickets. This time sweeping in on the onside, straight to the mid-wicket fielder. Numan Chawla so far batting on 3. This time again sweeping the ball, getting an inside edge, hitting straight into his front pad. So the last ball of the 14th over coming up. Numan Chawla against Abdul Rahman Bombia. And again it was a good delivery. He couldn't work it away on the onside. So Abdul Rahman Bombia has been done with his 4 overs. He picked up 2 wickets for 23 runs. 14 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 74 for 5. आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, HD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। So both the spinners, Abdul Rahman Bombia and Usman Ashraf, are done for tonight. Abdul Rahman picking up 2 wickets, whereas Usman picking up a wicket here tonight in this last league game of Gulmohar City Presents Youth Friendship League. Some work to do now for the Mashal Plastic Tigers batter. There is a change in the bowling. The right arm leg spinner has been introduced from the opposite end. Saad Dawood. Runs have been hard to come by from Mashal Plastic Tigers batters. This time again, narrowly missing the inside edge from the batter. Mubashir Anwar so far has found it difficult to time the ball. Again, played on the offside. There is protection out there in the deep. It's just going to be a single. So Umar Khanani and Anas Sattar Karwa bowl 3 overs each in the batting power play. So hopefully they'll be bowling the final few overs in this innings. This time again swept that wide of the fielder at long on all along the carpet. Big straighter boundaries here at the TMC cricket ground. What are the boundary hitting options for the batters? This time again looking to play it on the offside, missing it completely. The fielder at third man is inside the circle, so damming it down to third man or playing that late can bring runs to the batters. This time smashing it straight to the bowler. And was there a cotton ball chance? The suggestion from the wicketkeeper suggests that it hit his hand directly. And that might have been the 6th wicket down to Mashal Plastic Tigers. This time smashing it down the ground straight to long off. Another single to end the over with. Good bowling this from Burj Builder Hogs. After 15 overs, Mashal Plastic Tigers are 78 for 5. 15-78 है मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब,
वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ, ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा Masjid in. This time played on the offside. A single to start the over from Moin Jahangir. Both Numan Chawla and Mubashir Anwar have seen enough deliveries now. They should look to hit a boundary each and every over. Again hitting it on the offside, wide of the fielder at deep point. The 2 runs taken. That is so crucial when you are finding it difficult to hit boundaries. You should rely on singles and twos. Keep the scoreboard moving. Still more than 4.5 overs remaining in this innings. This time smashing it down the ground, Numan Chawla. But the fielder at long on cuts that one off. They were going for that second run, but the batter at non-strikers end wasn't interested. That single brought Mubashir Anwar back on strike. So far, he has scored 8 of 14 deliveries. Again, looking for that big shot down the ground, but there is protection out there in the deep. Nicely fielded by the fielder at long on. So far, we haven't seen much turn in this pitch. There you see the ball keeping low this time. Numan Chawla was looking to hit it on the onside. The ball didn't bounce as much as he was expecting it to be. Good start this from Moin. No boundaries so far in this over. Last ball coming up. This time bowling that off spinner. Rolling his finger across. Played on the onside to deep mid wicket. Another single to end the over with 16 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 84 for 5. सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें, जहां तरक्कियाती काम तेजी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी। एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड Saad Dawood is going to continue with his second over. Bowling from the opposite end. Spinners have made it difficult for these batters. They have looked to play the horizontal bat short square on the either side of the wicket, but the boundaries have been difficult to come by. Mubashir Anwar now batting on 9. He has faced 15 deliveries so far. This time smashing it straight to the bowler, and the ball hit the bowler's hand and then went straight to hit the stumps. And in that process, Numan Chawla has been dismissed. And a wicket. This time again looking to smash it on the onside. It's going to be just a single. So 18 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 91 for 7. गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ, ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात,
इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। Sameer Javed. So we are into the last 2 overs of this Mashal Plastic Tigers innings. Sameer Javed is the new bowler from the opposite end. Another leg spinner. This time pulled away on the onside, and it's going to be a welcome boundary to Mashal Plastic Tigers. They need more few of those if they want to post a decent total. Loose start from Sameer bowling wide outside the leg stump. And SNRF just swiveled away and pulled it on the onside. There was no chance for the fielder at deep square leg. This time bowling it straighter and much fuller. The batter getting a thickish inside edge. Nice comeback from Sameer. The first delivery was pretty short and was on leg stump. This time it was targeted right into the stumps and much fuller. That singles now brings Mubashir Anwar back on strike. Again bowling it fuller right into the stumps. Again hitting it straight down the ground. Sloppy effort this from Anas Satakar, but there just should have been a single. Every run is crucial at this stage of the innings, considering the fact that chasing has not been easy in this tournament. We are in the 19th over. They haven't crossed their 100 Mashal Plastic Tigers. And this time smashing it on the onside into the gap between deep in wicket and long on. Some work to do by the deep in wicket fielder. And the batters go for those 2 runs in between. So with that, couple 100 comes up now for Mashal Plastic Tigers. They are 100 for 7 and we are in the 19th over. Mubashir Anwar batting on 17. This time again looking to hit it on the onside, getting a thickish inside edge, the ball hitting his boot and then being gathered by the wicketkeeper. He has been pretty sharp behind the stumps. Last ball of the 19th over coming up. Again the batter getting an inside edge and the ball hitting the pads of the wicketkeeper. There you see again it was ball outside the off stump. The batter looking to smash it on the onside, getting an inside edge. And luckily the ball didn't go in between the wicketkeeper's legs. So a dot ball to end the over with 19 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 100 for 7. जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून। So Saad Dawood is going to be bowling the 20th over. Still no Anas Sattarkar but to finish his spell. Burj Builder Hawks captain relying on his spinners a lot more in this innings. And rightly so. Again starting this over with just a single. Burj Builder Hawks spinners have bowled exceptionally well in this innings. This time look smash it on the offside, wide of the fielder at long off. Nice diving effort, straight throw to the bowler's end, and it has been a run out. SNR was always struggling for that second run. He was having issues with his back. Mubashir Anwar smashing it on the offside, wide of the fielder at long off. He stopped the ball and threw at the bowler's end. And there you see SNRF limping for that second run. And there was no chance for him to complete that run. So a single and a run out of the previous delivery. SNRF being dismissed. Daniel Tariq is the man at number 10. Mubashir Anwar again pulling it away on the onside.
Only a single. Nice throw from the deep mid wicket fielder straight to the wicket keeper. They want to win this match so badly, Burj Builder Hawks. Remember, if they can win with a good run rate, they will end up at number 3. And these two teams will play again in the eliminator number 1. It's the last match of the league stage between Burj Builder Hawks and Mashal Plastic Tigers here in this Gulmohar City presents Youth Friendship League. So last two deliveries coming up in this first innings. Again, smashed down the ground by Mubashir Anwar. Is that going to go for 4? A slight misfield, and the ball crosses the boundary. Not a good effort by the fielder at long off. They have been so good so far. There you see, flighting it up, Saad Daud. Mubashir Anwar smashing it down the ground. And the fielder at long off was pretty square. He got there, but he couldn't get his hand onto it. Important boundary. Last ball of the innings coming up. Again, bowling it short. Pulled away by Mubashir. Where is that going? Nicely stopped by the fielder at deep mid wicket. The batters are going for 3 runs. Nice running by the 2 batters out there. So 7 runs coming up the last 2 deliveries in this first innings. 20 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers finish up with 111 for 8. Let's look at the scorecard. Munibur Rahman was the first batsman to be dismissed. He went for a run out. Mustafa Musa then played crucial log of 35 from 26 deliveries. Ali Mustafiz was clean bowled by Anas Karwa. Quite splendid new ball bowling from him. Bilal went after scoring 19 runs. Mubashir Anwar came at number 5 and we were still there till the end. He scored 26 or 28 delivery. Noman Bari just scoring 2 runs. Noman Chawla also just scoring 9 runs. Afan Imran and Daniel Tariq scoring 1 run each. Anas Karwa took the new ball and he was pretty lethal with the new ball. He bowled a maiden, pick up a wicket and went for just 10 runs in his 3 overs. Omar Khanani also just going for 22 runs. Usman Ashraf picking up a wicket in his 4 overs. Abdul Rahman Bombia as economical as ever, picking up 2 wickets for 23 runs. Saad Daud went wicketless tonight in his 3 overs. And Moin Jahangir picking up another wicket in his 2 overs. Sameer Javed just bowling 1 over for 9 runs. So when we will be back for the second innings, Burj Builder House will be requiring 112 runs in their allotted 20 overs. और महफूज हों तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल।
कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेजी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार
हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें, जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें, जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें, जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए।
जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिजाइन किए गए हैं। Welcome back to the second innings here from TMC Cricket Ground in the match number 15 of Gulmohar City presents Youth Friendship League. It's match number 15 and it's a final league game of this league between Mashal Plastic Tigers and Burj Builder Hawks. Earlier we saw Mashal Plastic Tigers winning the toss and deciding to bat first, and they could only manage 111 runs in their allotted 20 overs. So the target for Burj Builder Hawks is now 112, and it's like Hasnain Deriwala is going to be on strike. Mustafa Musa will be bowling with the new ball. He has been pretty effective with that new ball from Mashal Plastic Tigers. His best figures of 6 for 16 came in this tournament against NJS Chargers, where he took those 6 wickets, including a hat-trick. If Mashal Plastic Tigers went on to win tonight, they will end up on the second position, and Cambridge Strikers will have to play eliminator number 1 with Burj Builder Hawks. On the other hand, if Burj Builder Hawks manage to chase down this target, these two teams are going to be competing again in eliminator number 1. So a crucial game for both these sides. Mustafa Musa is going to be taking the new ball from the masjid end. Long on and long off board inside the 30-yard circle. He has taken the first slip. There you see, starting off with the wide delivery outside the off stump. The ball pitching and moving further away. That has been the speciality of Mustafa Musa. He bowls those lovely outswingers to the right-hander. Earlier on, Anas Sattar Karwa was bowling beautifully. The left-armer was always moving the ball away from the left-hander. This time getting an outside edge, guiding it down to third man. So Hasnain Dariwala getting off the mark with a single. It was a shorter delivery from Mustafa Musa, and it was guided down to third man. It was an up edge shot, but the ball landing between the fielder. That single now brings Ahmad Asif now on strike. The target is not a big one. 112 can be chased, but we have seen chasing has been difficult in this tournament. Nicely played with the straight back to the bowler. Mustafa Musa moves the ball away from the right-hander. And Numan Chawla, as we have seen, he brings the ball back in. So it's a good new ball combination here for Mashal Plastic Tigers tonight. There you see, driven on the offside. Beautifully fielded by the fielder at extra cover position. He stopped the certain boundary. That's the sort of effort the fielding side requires when you are defending a low total. Mustafa Musa bowling it full, the ball moving away. Nicely driven by the batter Ahmad Asif. And it was nice diving stop by the fielder at the cover position. He stopped that certain boundary. The batter scored for the single meanwhile, which brings Hasnain Dariwala back on strike. The slip has been removed. Again taking the aerial, playing it on the offside. And that's a 6. Top shot that by Hasnain Dariwala. He was looking very dangerous the other night as well when he scored 38 of just 20 deliveries. And he has started from where he left off. Top shot this, the ball moving away. And there was no intent in keeping that ball down. Went sailing over the offside.
First six coming off the bat from Hasnain Dediwala. And what a start this is for Burj Builder Hawks. He's not even wearing a helmet, so he's pretty brave. Mustafa Musa adjusting his length, bowling a shorter delivery this time. The ball coming back in. Hasnain Dediwala's innings will be pretty crucial in this run chase. If he can get off to a good start in this batting power play and take his side to 50 inside the first 6 overs, the chase might be pretty easy for Burj Builder Hawks batter later on. Last ball of the first over coming up. And again it was a shorter delivery. Again went to scoop it down to third man but missing it. So a dot ball to end the over. First over has been bowled. Burj Builder Hawks are 9 without a wicket. मॉडर्न आर्किटेक्चर पर गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहत। Numan Chawla is going to share the new ball with Mustafa Musa. He's going to be bowling from the opposite end. He has deep mid wicket in place. No one patrolling the boundary on the offside. With point cover and extra cover in position. This time nicely the ball coming back in and softly played by Hasnain Dediwala down to long on. Smart batting this from the right-hander. In fact, it was Ahmad Asif who played that gently down to long on. That now brings Hasnain Dediwala back on strike. Both these openers have decided to come out to bat without the helmet. So they look pretty confident. They are in a mood to chase down this target, just like Babar and Rizwan did for Pakistan against England tonight at the National Stadium, Karachi. Chasing down the target of 200 without the loss of any wicket. Can we see a repeat performance here from Burj Builders tonight? This time the ball coming back in the air. Hasnain, as we have seen, is a very strong player on the offside. Again, there you see he was looking to hit it on the offside. That ball came back in. If he had played on the onside, he might have got few runs. This time, again getting an inside air straight to mid-on. There is a throw at the keeper's end. Nicely gathered by the wicket-keeper Munibur Rahman. Single completed meanwhile. Hasnain Dediwala looks to play all these shots on the offside, but it's going to be difficult against Numan Chawla because he brings the ball back in to the right-handers. Numan Chawla and Mustafa Musa, both medium pace bowler, both knows how to swing the ball in the air with the new ball. There you see the ball coming back in, played down the leg side, past the fielder at short fine leg. It is going to run away for 4. Yes, it does. First boundary for Ahmad Asif. He was waiting inside the crease. The ball is again pitching and coming back into the batter, and he played it fine of the fielder at short fine leg. And with the ball being relatively harder and newer in this outfield, there was no chance for the fielder at short fine leg to cut that one off. So a 6 in the previous over to Hasnain and now a boundary in this over to Ahmed. They have started off well in this run chase.
This time nicely played straight down the ground. There is protection there, deep long on. Smart batting this from the East batter. After getting a boundary in the previous over, he took a single and got at the North striker's end. The target is not a big one, but as we have seen, it becomes difficult during the middle stages of the innings when the spinners operate. And Mashal Pasik Tigers are equipped with some really good spinners. Noman Bari, for example, he bowls cleverly. His left armers are pretty difficult to get away with. Last ball of this over coming up from Noman Chawla. 7 runs of this over so far, including a boundary. Hasnain Deriwala now is back on strike. This time again was looking to hit it on the offside, missing it altogether. So 2 overs have been completed. Mashal, Maiman Stars, Burj Builder Hogs are 16 without a wicket. यार जिंदगी और हाँ इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, एसडी और एसबीसी से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहर सिटी कराची में कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट मन जिंदगी हो। So Mustafa Musa has been taken off the attack straight away after bowling just 1 over. And as I was mentioning, Noman Bari has been introduced from the Masjid end. We have seen how spinners have played a key role in this tournament. Most wickets have come off to spinners. But it's not going to be an easy task for Noman, especially in this batting power play when there are just 2 fielders outside the 30-yard circle. Starting off with a fuller delivery right in the line of the off stump. Played with the straight bat by Ahmed Asif. So what are his boundary options? This time pulling it away wide of the fielder at mid-on. There was a chance of a single, but Hasnain Deriwala rightly sending the batter back. Noman Bari has taken long off outside the 30-yard circle. Ahmed Asif nicely playing it on the onside, wide of the fielder at mid-wicket. Good batting this from this batter. Remember, if Burj Builder Hawks wins tonight, these two teams are going to be facing again in the eliminator number 1. Classic Garments have already qualified for the finals. And the winner of eliminator 1 is going to be facing Cambridge Strikers in eliminator number 2 then. Noman Bari again adjusting his field for Hasnain Deriwala. This time Hasnain looking to hit it on the offside. Wide of the fielder at long off. And the batters are going to come back for 2. Hasnain didn't time it as well as he would have wanted. He took the aerial loop, went over the head of the cover fielder. But the fielder at long off was pretty square. And he kept it down to just 2. This time again bowling it fast into the line of the off stump. Playing it with the straight bat, Hasnain. As you see from his stance, Hasnain is always standing outside the leg stump. So if there is any room given to him outside the off stump, he will free his arms and play for the big shots. This time played straight to the bowler. So good over from this Noman Bari. 3 overs have been bowled. Burj Builder 19 without a wicket.
जहां आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास। So Numan Chawla is going to continue with his second over with this new ball. Burj Builder Hawks so far haven't lost a wicket in this batting power play. This time smashed on the onside, wide of the fielder at long on. Is this going to go all the way for 4? Slight misfeel and the ball runs away. That should have been stopped. Such fielding efforts won't win you matches, especially when you are defending a low total. Again, he's bowled that shot. Numan Chawla brought the ball back in. There was a big gap between long on and deep mid wicket. The fielder at long on got there. The ball just went between his legs and another boundary to Ahmed Asif. Good start of this over for Burj Builder Hawks. It's a good decision by Maiman star Mashal Plastic Tigers of persisting with Numan Chawla. This time again taking the aerial route. Wide of the fielder, a deep square leg. Consecutive boundaries to Ahmed Asif. He's toiling the bowling so far. Numan Chawla again bowling it onto his pads, and Ahmed Asif, unlike Hasnain Deliwala, had no hesitation in playing that shot on the onside. He never thought about keeping it down to ground. Took the aerial route, one bounce and into the fence. So 2 boundaries of the first 2 balls in the second over from Numan. He will be under extreme pressure now. This time it's a good Yorker. Played on the onside, straight to mid-wicket fielder. Good comeback by Numan Chawla. As I was mentioning, it was a good decision of persisting with Numan, because Hasnain Deriwala always looked to hit everything on the offside. And with Numan bringing the ball back in, there is always chance of him hitting Hasnain's stumps. But on the other end, Ahmed Asif has found it absolutely no difficulty in hitting those big shots on the onside. Munibur Rahman waiting for that outside edge. This time again going for that big heave, and that ball was very close to the off stump. Munib's reactions clearly says that. It was in his arc. Ahmed Asif was looking to deposit that over long on, but the ball narrowly missed the off stump. They are already scoring at over 8 runs and over. Ahmed Asif scored 2 boundaries in this over. Do he need to take those risks? The required run rate is well under 6 runs and over now. This time again, smashed it on the onside. Will this be taken by the fielder at long on? And yet it has. He took that catch in the second attempt. And with that dismissal, Burj Builder Hawks have now lost their first wicket. Again, that was in the arc. Numan Chawla bowled that one slow. It came back in the air. Ahmed Asif was looking to smash it wide of long on. The fielder at long on positioned himself perfectly. A slight juggle, but he took it in the second attempt. Important wicket that for Mashal Plastic Tigers. Ahmed Asif dismissed after scoring 16 runs of 12 deliveries. And Burj Builder Hawks are 27 for 1. यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम अब मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk।
महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट। So Habib Shoaib is the new batter at number 3 for Burj Builder Hogs. They just lost their first wicket. Ahmed Asif, the batter, dismissed. Surprisingly, the batter didn't cross while that shot was played. This time nicely defended on the offside. So a dot ball to end the over with. Burj Builder Hogs are still 27 for 1 after the end of 4 overs. स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना? Noman Bari is going to continue with his second over from the Masjid end. Hasnain Deriwala is on strike. Will he look for those big shots again, especially after the dismissal of Ahmed Asif? Starting off with a wide outside the off stump, given as a wide by the umpire. They got that crucial breakthrough in the previous over from Numan Chawla. It was a big wicket. Ahmed Asif was looking dangerous. Numan came back well after being struck for 2 boundaries of the first 2 balls. This time smashing in on the offside, straight to long off. Hasnain Deriwala looks to absolutely murder everything that is pitched outside the off stump. Numan Bari realizes that he's still bowling inside the batting power play, so he's not giving any flight to the batters. He's bowling it flat, and he's looking to bowl as close. And is this gonna be going for 4? Yes, it does. He utilized Numan Bari's pace beautifully there, Habib Shoaib. Numan Bari bowling it wider off his crease. Bowling it wide outside the off stump, the ball turning ever so slightly, and he guided it down to third man. There was no chance of the fielder. The ball just raced away out of the fielder's reach. So first boundary. To Habib Shoaib. Burj Builder Hawks just requires 79 more runs to win now. He corrected his length now, Numan Bari. There's a throw at the bowler's end. Single taken by the 2 batters. Again, there has been a change in the field for Hasnain Deriwala. 3 fielders now on the offside inside the 30-yard circle. There is deep point as well. No one in the deep on the onside. Long off fielder is standing inside at the boundary ropes.
Again, Hasnain smashing it straight down the ground. Has it gone all the way? Taken by the fielder at long on. So Numan Bari also amongst the wickets now. This time it was a slower delivery. Hasnain was looking to smash it over the head of the long on fielder. But he got the elevation and not the distance. The second now catch for the fielder at long on. 2 wickets in 2 overs for Mashal Plastic Tigers, and Burj Builder Hogs are now 34 for 2. चाहिए जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो, ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल। Overs have been bowled. Burj Builder Hogs are 35 for 2. आइए जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइड पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के। So Noman Chawla is going to continue with his third over. Both the openers are now back into the dugout. Noman dismissing Ahmad Asif in his second over. And in the previous over, we saw Usman Bari picking up a wicket of Hasnain Dediwala. The run rate has been pretty decent so far. They are scoring at 7 runs an over. This time again played with the straight bat, straight to the fielder at a cover position. Aziz Musani with that single getting off the mark. There is a fielder at deep fine leg to Noman Chawla. Again, good running by these two batters. Played towards mid-on with the straight bat. Soft hands from Habib Shoaib on that occasion. So a decent start this from Burj Builder Hogs. Their opener got them off to a good start. But then Ahmad Asif losing his wicket. Going for that big shot on the onside. And Hasnain Dediwala also dismissing in the same fashion. This time smashing it on the offside. Straight to short third man fielder. There was a throw at the batter's end.
Nice backup there by the fielder at mid-wicket. 3 singles in this over so far. Already 4 boundaries and a maximum has been hit inside the batting power play. And it's the lack of boundaries that hurted Mashal Plastic Tigers' innings. This time again, nicely defended on the offside. The fielder was quick on his feet, didn't allow a single to Habib Shoaib. As I was mentioning, even up till 12 overs, Mashal Plastic Tigers only hit 3 boundaries and a 6. Whereas we have seen already 4 boundaries and a maximum has been hit. And we are yet in the batting power play. So the last ball of the 6th over coming up from Noman Chawla. Habib Shoaib is on strike. Again, it is a good delivery, played straight down the ground. He's going to go all the way for 4. Top shot this from Habib Shoaib. Good cricket all around. It was a good delivery. He managed to squeeze the ball out. And on the same occasion, he managed to find the gap as well. There was no chance of the fielder at mid-off. He was standing well inside the 30-yard circle. So a boundary to end the over with. Burj Builder Hawks after 6 overs are 42 for 2. शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? So the batting power play has been done. Fielding restrictions have been uplifted. Noman Bari continuing with his 3rd over. This time a leading edge from the batter and an easy catch by the fielder at point. Looks like it's Noman Chawla back in action. He bowled his previous over and now he has taken the catch to dismiss Aziz Musani. Crucial passes of play this here in this contest. Noman Bari this time flattening the ball. The batter looking to hit it on the onside, only managing to get the leading edge. It's such easy catch taken by Noman. So Burj Builder Hawks have now lost their 3rd wicket for 42 runs. जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क सुनते हैं Usman Ashraf is the new batter in. The batter's cross while that catch was taken by Noman Chawla. So Noman Bari again picking up a wicket in this over. He dismissed Hasnain Deriwal in his previous over. This time nicely played on the onside by Habib Shoaib. But there is protection out there in the deep. Straight to deep square leg. 2 fielders are patrolling. शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक।
So a bowling change has been made from the opposite end. Noman Chawla has been replaced by Afan Imran. Another left arm spinning option for Mashal Plastic Tigers. He's going to be bowling to Usman Ashraf. Starting it with a wider delivery outside the off stump, played straight to extra cover fielder. Sharp single taken by the two batters. Afan Imran, not a big turner of the ball, but he looks to bring the ball back into the right-hander. Relies heavily on that arm ball. And if he can manage to land the ball and not at round about the off-stump channel and bring the ball back in, things will be difficult for Habib Shuaib to negotiate. Habib Shuaib so far has scored 11 runs of the 9 deliveries that he has faced. This time again bowling it slower in the air. Clever operator Afan Imran. He not only change in pace, also makes it difficult for the batters to time their ball. When the ball is slower, they look to delay their shots. There you see again played on the offside. Slight misfield by the fielder at extra cover, wide of the fielder at long off. A good throw back to the bowler, keeping it down to just a single. Usman Ashraf is absolutely in no mood of taking those risky runs. He knows how important the victory is tonight for them. Munib this time again playing it straight back to the bowler. A slip in place at this stage would be handy. There you see, as I mentioned, Usman Ashraf guiding that ball down to third man. Oman Bari giving the chase. 2 runs completed by Usman Ashraf. So 66 more runs required now of 75 deliveries by Burj Builder Hawks to register this victory in the final game. Final league game, in fact, of Gulmohar City presents Youth Friendship League. Good over this so far from Afan Imran. There you see again flighting the ball out around the off stump. A wide throw. And that's going to allow another run to the batters. So couple to end the over with. That couple also brings up the 50 for Burj Builder Hawks. They are 50 for 3 after the end of 8 overs. और बहुत कुछ, ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें, जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार
हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब अम्यूनिटीज इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट slows down the scoring rate. That suggests that the ball was wider of the leg stump. He's going to be changing his angle to the left-hander Usman Ashraf now. He'll be bowling over the wicket. Noman, can he pick up another wicket in his final over and make this chase a little more interesting? Nicely bowled it slower. Played with soft hand on the offside. A better throw could have made things a little more interesting. Good discipline bowling this from Mashal. Plastic Tigers bowlers. Just 2 extra runs have been given in this innings so far. And as this has been the story throughout this tournament, runs have been difficult to come by, especially against the spinners in the middle stages of this innings. We saw Hasnain Deriwala and Ahmad Asif scoring bulk of the runs when the ball was relatively fresh and new. But since Noman has been introduced, wickets have tumbled and scoring rate has dried up. Only 5 boundaries and a 6 so far in this innings of Burj Builder Hawks. This time it was shorter and Habib played it straight down to long on. So a single to end the over with. 9 overs have been completed. Burj Builder Hawks are 55 for 3. की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्कियाती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप सुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 Afan Imran will continue with his second over. 57 more runs required now for Burj Builder Hawks to register another victory here in this final league match of Gulmohar City presents Youth Friendship League. Habib Shoaib is on strike, starting off with a fuller delivery, smashed down the ground, but there is protection out there in the deep, straight to long off, singles to start the over. They are scoring at round about 6 runs and over. They have lost 3 wickets, so they will be extra cautious, the 2 batters out there. The bat delivery will come. All they need to make sure is that they do not play more dot balls, because dot balls create pressure on the batters. The required run rate is well under 6 runs and over. There you see they required 56 runs from 65 deliveries. Usman Ashraf smashing it on the offside, finding the gap between the 2 fielders. Is that going to go all the way for 4? Yes, it does. First boundary to Usman. Top shot that. Afan Imran bowling it wide outside the off stump. And there was plenty of room to play with for Usman Ashraf. There were 3 fielders on the offside and he managed to bisect the gap between the point and extra cover. And the balls won the race in the end. So a welcome boundary to Burj Builder Hawks. They are 60 for 3. Require another 52 runs to win. Good comeback this from Afan Imran. This time he altered his length, bowled it much fuller. This time a full toss played wide of the fielder at long on. Will they go back for a second? Yes, they do. Good run. Good running by the 2 batters. Nice partnership building between these 2 batters, Habib Shoaib and Usman Ashraf.
Afan Imran bowling his second over. So far he has been wicketless. This time again nicely worked on the onside. Work for the fielder at deep mid wicket. Another single. They are easily getting those singles and twos almost every over. Afan Imran so far has been wicketless. He's bowling the last delivery of his second over. This time the batter getting an inside edge. And again, a lot of work needs to be done by the fielder at deep square leg. So a couple to end the over with. Burj Builder Hogs are moving along nicely. They are 65 for 3 after 10 overs. मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट Live. So Mubashir Anwar is replacing Numan Bari. Numan Bari has bowled out his spell of 4 overs. He picked up 2 wickets tonight as well. Another left armour option. Mubashir Anwar is going to be bowling to Usman Ashraf. Played straight back to the bowler with the straight bat. Building between these two batters. This time nicely worked away on the onside, straight to mid wicket. Chance of a run over at the bowler's end. A direct hit would have sent Habib Shuaib back to the dugout. Usman Ashraf not at all pleased with the non-striker. He never wanted the single there. This time nicely guiding it down to short third man. Another run out of time at the bowler's end. Mustafa Musa backing it up. The right-hander Habib Shuaib now is on strike, so there will be change in the field. There is deep square leg, deep long on. Mid-off is inside the circle, and there is deep point as well. This time nicely played on the offside, played inside the circles, and the batsmen have absolutely found it easier to take those singles. The fielder inside the 30 yard. Again, Usman Ashraf playing it on the offside, another single. The fielder needs to charge inside the circle as the bowler gets ready to bowl. Again, it's shorter and smashed down to mid-off. He tries to stop with the foul foot, but the ball crosses the boundary. Good thinking by the right-hander. He saw that mid-off was inside the circle, so he flat batted it. And there should have been a better effort by the fielder. He should have gone with his hands. Instead, tried to stop the ball with his right foot. But the ball going between the legs. Builder Hawks are 72 for 3. विजिट करें जहां तरक्याती काम तेजी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी।
एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम। So Affan Imran has been replaced by Daniel Tariq, the right arm leg spinner. Starting off with a shorter delivery, smashed two extra cover fielder. Usman Ashraf will be considering himself very unlucky. Had he able to find the gap between the extra cover, the mid-off was inside the circle and that ball would have raced away to the boundary. Instead, it's just a single. So Habib Shoaib, after striking the final ball of the previous over for boundary, is now back on strike. 39 more runs required by Burj Builder Hawks to register a victory in this final league game of Gulmohar City presents Youth Friendship League. Wide signal by the umpire. The chase is looking much more easier now. They still have 7 wickets in hands. This time again, cut away. Some work to do, but the batters go for those 2 runs meanwhile. Mashal Plastic Tigers, if they want to remain in this contest, if they want to win this game tonight, they will have to rely more on wickets. And for that, the fielders need to support the bowlers. So far, too many easy singles have been given away. As we have seen, 7 boundaries and a 6 has been hit in this inning so far. We are in the 12th over of Burj Builders Hawks innings. Habib Shoaib is batting beautifully on 25. There was a stage when they lost 3 wickets in 3 successive overs, but since then it has been good partnership between the right-hander and the left-hander Usman Ashraf. This time smashed down the ground. One bounce straight to the fielder at long off. Usman Ashraf meanwhile has scored 17 runs at a run a ball. There are few spectators in here witnessing tonight's match here at TMC Cricket Ground. Daniel Talik bowling his leg spinners to the left hand. There you see again played with soft hands. And I don't think there was a single there. Had the fielder charged towards the ball a little bit more, he might have cost a run out. Instead, it's a single. And another run added to the total. There's 34 more runs required now for Burj Builder Hawks. Here in the smash number 15 of Gulf hands. So 12 overs have been done with. Burj Builder Hawks are 78 for 3. लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। जब हम बात जिंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फिजा में ताजगी का एहसास हो, ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद जिंदगी, ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहाँ पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी।
लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर Mustafa Musa has been given the new ball now. He bowled the first over of this innings, went Deriwala, and since then he was removed from the attack. I think it's a good move from the Mashal Plastic Tigers captain. The spinner hasn't looked to trouble the batsman at all tonight. What can Mustafa Musa do? He's bowling his second over, the 13th over of this innings. He started this over with a wide down the leg side. It's a good move considering that it is a left-hander in Usman Ashraf. And as you all know, Mustafa Musa is very much capable of bringing the ball back into the left-hander. A wicket got two here, can make a little thing more interesting this time. Nicely played on the onside. They're shooting for 2 runs. And they're going to complete it easily. So 32 more runs required now by Burj Builder Hawks to win this final league match of this Gulmohar City Presents Youth Friendship League. Usman Ashraf and Habib Shoaib have batted sensibly after Burj Builder Hawks lost their 3rd wicket. This time nice delivery. Round about that off-stump channel, the ball moving away ever so slightly. Mustafa Musa haven't looked in his rhythm tonight. Earlier we have seen him causing damages to the opposition with the new ball at the top of the order. This time it was a shorter delivery. The batter took his eyes off the ball, got a leading edge. Luckily the ball landing between the fielder and there was no damage done to Burj Builder Hawks. Good change in length by the bowler. He bowled 3 deliveries fuller into the line of the stumps and then he tried a shorter delivery. The batter wasn't expecting that. That single now brings right-hander Habib Shoaib back on strike. So there will be a change in the field now. There is mid-wicket in place. 3 fielders inside the 30-yard circle on the offside. Short third man, point, cover. Mid-off and mid-on inside the 30-yard circle as well. Habib Shoaib this time coming down the track and letting the ball go to the wicket keeper. Wide signal by the umpire. So 2 wides in this over so far. Just 30 more runs required now for Burj Builder Hawks. They lost their last game against Cambridge Strikers when they couldn't chase down a target of 172 and just fell short by 12 runs. Keeper Munibur Rahman up to the stumps. So that's going to be interesting. Mustafa Musa is not a slow bowler by any stretch of imaginations. This time it was a slower delivery, played with the soft hands on the offside. Another single taken. So Munibur Rahman saw the right-hander Bilal Shoaib coming down, Habib Shoaib coming down the track, so he came up to the stumps, preventing the batter to leave his crease. Again changing the field for the left-hander. There's deep square leg, mid-wicket is inside the circle. Mustafa Musa. This time again shorter delivery, getting an inside edge and the keeper didn't gather it. And it's just a single. So 13 overs have been bowled. Burj Builder Hawks are moving along nicely. They are 84 for 3. बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है।
इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्कियाती काम तेजी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हों, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी। एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स Mubashir Anwar bowling from the opposite end. 14th over is in progress. Just 26 more runs required now for Burj Builder Hawks. The right-hander Habib Shoaib is on strike. This time he's smashing it on the onside. Has he connected it well? One bounce straight to the fielder at deep mid-wicket. The bowler isn't very happy with this effort from the fielder in the deep. He wanted the fielder to go for that catch. And rightly so, the ball didn't land far away from the fielder. Defended on the offside. Had he shown a little intent there to take that catch, that would have been 4 wickets down for Burj Builder Hawks. Another dot delivery. The required run rate is not an issue. They just require 3.85 runs and over. This time smashing it on the onside, wide of the fielder at long on. Usman Ashraf picking up another single. 88 हो गया। Good over this so far for Mubashir Anwar. The wickets have dried up since that third dismissal. Habib Shoaib and Usman Ashraf have batted beautifully. This time again smashing it straight down to long on. And a wicket goes down now. So Mubashir Anwar ending his second over with a wicket. Habib Shoaib is the batsman dismissed. And with that dismissal, Burj Builder Hawks have now lost their 4th wicket. They are 88 for 4. There you see it was a shorter delivery and he was looking to smash it. The fielder at long on was well inside the boundary and Noman Chawla made absolutely no mistake. That's his second catch of the night in this game. So a good partnership comes to an end with the dismissal of Habib Shoaib, the right-hander. Burj Builder Hawks still required 26 more runs to win. कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क,
लेक और बहुत कुछ, ये सब अम्यूनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती हैं। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेजी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। Although the openers were dismissed, but the batters in the middle have taken just this chase nicely. This time another sharp single. There was a throw at the bowler's end. Mashal Plastic Tigers, after winning the toss, they chose to bat first. They were hoping to put up a decent total on the board and exert pressure on Burj Builder Hawks in the second innings. Instead, they were just bundled out for 111 in their 20 overs. And so far, this has been a relatively easier chase for Burj Builder Hawks. This time again, smashing in on the offside, finding the gap between the extra cover fielder and mid-off. Good effort is from Numan Chawla. Will he stop the ball from going to the boundary? Yes, he does. And 2 runs taken by Usman Ashraf. So Numan Chawla has been kept really busy in the field so far tonight. He has taken 2 catches. He has stopped few boundaries. He has covered a lot of distance on the ground tonight. There you go. He was looking to dab it down the third man. Wide signal by the umpire. This time again, trying to heave it on the onside. Played it wide of the long on fielder, Mustafa Musa. Cutting that one off, throwing to the bowler. Last ball of the 15th over coming up. Burj Builder Hawks are 96 for 4. They require just 16 more runs to win here tonight. Saad Faisal. Again hitting it on the offside, finding the gap between the extra cover and point fielder. His protection out in the deep. So only single will come of the final ball of the 15th over. Burj Builder Hawks are moving along nicely at 97 for 4. के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची So Mubashir Anwar has been asked to continue. He will bowl 16th over. He picked up the wicket in his previous over. That too of the set right-hander. Looks like it's going to be an easy chase from here on for Burj Builder Hawks. Saad Faisal batting on 2. He went for that big shot on the off stump, clearing the infield, and the ball is going to run away for 4. With that boundary, 100 now comes up for Burj Builder Hawks. It was not a convincing shot. He was trying to hit and to look to hit it over the head of extra cover fielder. Instead, got a thickish outside edge, and it went over the head of the point and short third man fielder. And since there was no protection deep on the offside, the ball just went away for 4. So just 11 more runs required now to Burj Builder Hawks. Giving the respect to that ball, Saad Faisal playing it straight to the bowler. This time again, smashing it on the offside. His protection out there in the deep now. So it's just going to be a single. The single now brings Usman Ashraf on strike. How sensibly he has batted the left-hander. He was never looking in any hurry. He never targeted those big shots, instead relied on those singles and twos.
there you see, that's the first big shot that he has attempted on the onside. And that has gone all the way for 6. First big shot attempted by Usman Ashraf, and that has come straight out of this meat of his bat. He absolutely smashed it out of his side. And it went over the deep mid-wicket position fielder, right into the praying area for a maximum. So just 4 runs required now for Burj Builder Hawks. This time again looking to play it straight. I don't know what Mubashir Anwar is complaining about. So the last ball of the 16th over coming up. Will he be looking to finish it in style? This time the ball hitting the pads. The fielder at short, third man is after it. It's just going to be a couple. Easy picking these for Burj Builder Hawks. So a couple to end the over with 16 overs have been bowled. Burj Builder Hawks are inching closer. They are 110 for 4 required. Just 2 more runs to win. It has been a sensible chase so far this from Burj Builder Hawks. They never looked out of this competition at any stage. Although at one stage they lost 3 wickets in 3 successive overs. But Usman Ashraf has steadied the ship beautifully. It's always important that a batsman who has faced so many deliveries to stay there till the end, and that is exactly what Usman Ashraf has done. The left-hander just went milking for those singles and twos. And his first big shot came in the last over when he smashed that huge 6 over deep mid-wicket fielder. Mashal Plastic Tigers were never in this competition tonight. They couldn't accelerate while they were batting during the middle stages of their innings. Their most consistent batsman Munibur Rahman was dismissed in the first over due to a run out. And from there on they could never build those innings. So Saad Faisal will be on strike. Looks like he's going to hit the winning runs. They just require 2 more runs now. Ample of deliveries remaining. Still 4 more overs left. All the fielders have now been asked to come inside the 30-yard circle. Looks like it's Bilal is going to bowl the final over. It's not the final over of the innings, but with just 2 more runs required, looks like Burj Builder Hawks are going to finish in the same over. Bilal bowling his first over tonight. Saad Faisal is on strike. Will he go for that big shot? Or will he just take a single and let Usman Ashraf finish the job? Defensive shot straight back to the bowler from Saad. Just one fielder outside the 30-yard circle, left D square leg. He has moved quite inside the boundary. Noman Bari again having a word with his fielder, moving the cover position a little more squarer. Don't think that will be of any use since they just require 2 runs and smashed on the offside. And what a way to finish this match by Saad Faisal. 2 runs were required, 2 runs easily taken. And with that couple, Burj Builder Hawks have won this 15th game of Gulmohar City Presents Youth Friendship League. Burj Builder Hawks managing to win this contest tonight easily by 6 wickets. Hasnain Dairywala and M. Asasif came as the openers and they provided a very good start to Burj Builder Hawks. Noman Bari then picking up a wicket of Hasnain Dairywala. He went for 11 runs. Ahmad Asif smashed 2 boundaries on the onside and then he was picked by Numan Chawla. Habib Shoaib and Usman Shafiq. Usman Ashraf then steadied the ship with a good partnership. Habib Shoaib being batsman dismissed. Aziz Musani also scored just 2 runs. Usman Ashraf staying not out for 36 runs. And Saad Faisal then hitting those winning runs in the 17th over. Not much to say with the bowling card. Mustafa Musa only bowling 1 over with a new ball. He went for 16 runs in his 2 overs. Numan Chawla picked up a wicket of Ahmad Asif in 3 overs. Gave away 20 runs as well. Noman Bari has been the pick of the bowler so far for Mashal Plastic Tigers in this tournament.
He picked up 2 wickets for 16. Afan Imran was wicketless tonight, gave away 25 runs in his 3 overs, and Mubashir Anwar also picking up a wicket in his 3 overs. So after winning the toss, Mashal Plastic Tigers decided to bat first, and it was a sorry looking scorecard. They could only manage 111 runs in their allotted 20 overs. Mustafa Musa being the top scorer with 35 runs. Abdul Rahman Bombia picking up 2 wickets for Burj Builder Hawks and a wicket each for Anas Sattar Karwa and Usman Ashraf. And in reply, there was no difficulty for Burj Builder Hawks batsmen at all. Usman Ashraf top scoring with 36 runs, and in the end, Burj Builder Hawks winning by 6 wickets with 22 balls to spare. We'll be back shortly with the presentation ceremony. M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है, वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेजी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहां सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल।
कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्याती काम तेजी से जा रहे हैं। तो फिर देर न कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। मैं इनको सेंटर में रखवाई ना, मैं ये सेंटर में रहने, ये पूरी गप्पे मार। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर न कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्ले ग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार
हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ। ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती है। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विज़िट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विज़िट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताज़गी का। Welcome to the presentation ceremony of this match number 15 of Gulmohar City presents Youth Friendship League. Burj Builder Hawks winning this last league game over Mashal Classic Tiger by 6 wickets quite easily. I would like to call upon stage the losing captain first, Mr. Munibur Rahman. टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, क्या लग रहा था, क्या टोटल अच्छा रहेगा डिफेंड करने के लिए? नहीं, टॉस जीत के अपने बैटिंग का फैसला किया। काफ़ी हद तक सही था। स्टार्टिंग में अनफॉर्चुनेट हमारे 2-3 विकेट ऊपर गिर गए और ग्राउंड अच्छा था उनके हिसाब से 30-35 रन हमारे शॉट के लिए। अच्छा, बर्ज बिल्डर हॉक्स की इनिंग्स के बीच में जो मान बढ़ गया, उन्होंने 2 विकेट के लिए लिए थे और 3 विकेट ओवर में 3 विकेट भी गिर गए थे, तो वहाँ से ऐसा लग रहा था मैच में कहीं से वापसी आ जाएंगे। जी बिल्कुल ऐसे लग रहा था, लेकिन कोई मैंने जैसे पहले कहा कि 25-30 रन मिले ऐसे जैसे शॉट चल रहा आप होते तो बहुत काम आते। बस वही चीज़ आखिर में हमारे लिए मुनीब आपने एलिमिनेटर बन दिया, इसी टीम के अगेंस्ट खेलना है, किन एरियाज़ पे इंप्रूवमेंट देखना चाहिए? जी बिल्कुल, बैटिंग में खास तौर पे काम करना है और बॉलिंग में आज 1-2 हमारे मेन बंदे नहीं थे, उनके नहीं थे, तो इंशाल्लाह फुल स्क्वाड के साथ दोबारा से मारेंगे इंशाल्लाह। Now the winning captain Mr. Usman Ashraf of team Burj Builder Hawks. Usman bowling से स्टार्ट करते हैं, नए बॉल से आने के लिए बॉलिंग में अच्छा आउट स्विंग किया उन्होंने लेफ्ट हैंडर्स को, बिल्कुल ही कर दी क्योंकि आप पावर प्ले में इससे ज़्यादा रन नहीं बन सके। सबसे पहले तो मुझे शुक्र है कि अल्लाह पाक ने बाकी ये नस का जो स्पेल था वो बड़ा क्रूशल स्पेल था। नस से यही बात की हुई थी शुरू के सारे मैचेस से, फर्स्ट मैच हो गया या दूसरा मैच हो गया, कि नस यही रिदम के साथ बॉलिंग करें, क्योंकि हमारा प्रीमियम फास्ट बॉलर है। जब प्रीमियम फास्ट बॉलर की तरफ से आपको अच्छा स्टॉक मिल जाता है तो पूरी टीम उठ जाती है, और आज आपका वही रिजल्ट था। सर्कल में रन दिए हुए नहीं थे, 30 हार्डली 35 रन थे जो उनके रन थे। वो सर्कल कंटेन अच्छा हो जाता है जब आपके पास 2 विकेट अच्छे आउट हो गए, तो प्लस उनके पास आज जो नए हिसाब से वो पूरी अपनी स्ट्रेंथ से खेल नहीं रहे थे, जिस हिसाब से वो अपनी स्ट्रेंथ से चले हैं पूरा टूर्नामेंट, तो वो भी एक थोड़ा सा लैक करता है कि वो भी नए लड़कों को चांस दे रहे थे। तो वही बात है कि हमारी टीम माशाल्लाह जान बहुत अच्छा खेली, स्टार्ट अच्छा मिल गया, जिसकी वजह से वो बात आपकी ठीक है कि कम टारगेट जब भी होता है, कम टारगेट थोड़ा सा मुश्किल होता है मैनेज करना, क्योंकि आपके पास एक चीज़ का जो है ना प्रेशराइज ये होता है कि यार दूसरी टीम कर दी गई है 114 का, हम ना ढेर हो गया 114 का। एज आई सेड क्लियर इन द प्रीवियस मैचेस कि भाई प्रेशराइज गेमें हैं, प्रेशराइज गेमों को टैकल करना पड़ता है, क्योंकि देखिए कम्युनिटी जहाँ की बात हो जाती है, सामने दिल्ली वाले मेमन टू मेमन होता है तो लड़के बहुत ज़्यादा जो है जैलअप हो जाते हैं, स्ट्रेंथ्स का पता है, एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं पर्सनल प्लेयर्स के, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि सामने जब कम्युनिटी की बात होती है, क्योंकि एक बड़ी बात है कि आप कम्युनिटी के रिप्रेजेंट कर रहे हो, उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने यहाँ तक मैच लेकर आए, 114 रन तक भी मैच लेकर आए। टॉप क्लास जो है उनके कैप्टन ने जो है बहुत अच्छी बॉलिंग की है नवान ने, तो वही बात थी कि कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं थे, बस यही था कि नेचुरल बेसिक टू बेसिक खेलना है, वही खेल रहे थे बस। नहीं, इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही है कि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए, बाकी होप टू सी कि अच्छा ही मैच हो इंशाल्लाह। Ali Mustafiz, if you can come here to present the awards to the award winners tonight. The first award is for the best bowler of the match, and it's
It's a gift hamper from me body spray and a free meal voucher from Biryani Wala, and it goes to Numan Bari for making 2 wickets. The next award for tonight is for the best batsman of the match, and it's a 1,000 rupees cash voucher from Debonair Saloon, and it goes to Mustafa Musa. मुस्तफ़ा Now for the cool player of the match, it's a gift hamper by Medicam and a free meal voucher by Penny Pizza, and it goes to Abdul Rahman Bombia. The big award for tonight is for the man of the match. It's a gift hamper by Admiral, a suit by Al Zuhaib, and 2,000 rupee cash award from Gul Mohar, and another 2,000 rupee cash award from Neyman Shah, and it goes to Usman Ashraf. That's it from the presentation ceremony here tonight. We'll be live again for the next eliminator. Till then, it's Allah Hafiz. एहसास हो ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद